for coming again. Namaskaram, namaskaram. Happy Saturday. So how are you doing, Doctor? Enjoying as always. Yeah, good to see you. Your favorite line. That's good. So हमारे साथ जितने लोग दर्शकों जुड़ गए हैं, प्लीज एक बार कमेंट कर दे आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं. और एज यू नो डॉक्टर साहब विल टेकिंग दिस टुडेज सेशन. और डॉक्टर साहब इज वेरी हैप्पली सेड कि नो आई विल डू इट इन हिंदी, इवन दो हिंदी आई थिंक इज. डॉक्टर साहब की हिंदी आपकी 5th लैंग्वेज है कि 6th की 10th? मैं 10th तक हिंदी पढ़ा है, उसके बाद हिंदी नहीं पढ़ा. ओके यार. और चांसेस बात करने का चांसेस भी बहुत कम रहता है हम, क्योंकि हमारे ऑफिस में सिर्फ इंटरेक्शन वो साइंटिस्ट लोगों के साथ रहता ना फॉर 20 साल. जी. सो फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं पूरी हिंदी बोलने की, तो थोड़ा बहुत बीच में आता है तो वो, बट ही स्पीक्स इन अ वे दैट यू नो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. सो वेलकम एवरीवन. प्लीज डॉक्टर साहब के हवाले में कर रहा हूँ स्क्रीन, और डॉक्टर साहब का आज का सेशन होने वाला है. अपना जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा था, तो प्लीज अपने बच्चों को लेकर बैठिए साथ में, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर साहब इज ट्राइंग टू कन्वे. सो द स्टेज इज ऑल योर्स, डॉक्टर साहब. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Ajeet. It's great initiative आपसे मिलना और बात करना, और इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा आ रहा है. कोलालमपुर से भी एक मेल आया था. हम वो श्लोक वगैरह वगैरह कैसे बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या करना है, और मैं उसको रेफर किया. हमारा नित्य श्लोक बोल के एक बुक है, वो बुक के हिसाब से वो सीक्वेंस पे डाला है. मैं वो चैप्टर वाइज भगवान के बारे में एक दूसरा श्लोक, और शांति मंत्र अलग, डेली रिचुअल्स अलग अलग, ऐसा एक मेरा बुक है नित्य श्लोक का. वो भी मैं रेफर करके, उसका एक्सप्लेनेशंस मेरा वीडियो है बहुत सारे, उसको भी रेफर करके दिया है. मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट वीक हम फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, क्या कर सकते, फिजिकल सप्तशुद्धि के बारे में भी बोला था. टेम्पल में जाते जाते क्या क्या करना है, तो आपका फिजिकल इम्प्रूवमेंट, पूरा भगवान के पास जाके, गणेश के पास जाके ऐसे एक्सरसाइज करने का तरीका भी बोला है, क्यों करना है. वो फिजिकल इंप्रूवमेंट के लिए, सिर्फ फिजिकल इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है. फिजिकल इंप्रूवमेंट के लिए है, बट सिर्फ फिजिकल इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है. इमोशनल इंप्रूवमेंट, कंट्रोल कैसे करना है, इंटेलेक्चुअली कैसे शार्प हो सकते, क्योंकि वो छोटे बच्चे होने के वो टाइम पे, मे बी 3 years to 3rd grade, 6 years in the beginning, हमारा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए लॉट ऑफ वर्ड्स, आइदर संस्कृत और कौन सी भी लैंग्वेज होने दो, वो लैंग्वेज नर्सरी राइम्स इंग्लिश क्लास में रहता है, छोटा LKG UKG ग्रेड 1 पे, उसका मीनिंग पूरा समझ में नहीं आता, बट फिर भी बच्चों लोग वो पूरा वर्ड्स माइंड में स्टोर करके रखता है. वो कंप्यूटर में एलोकेशन बोलते हैं, फर्स्ट एलोकेट करना है, उसके बाद रीडिफाइन करो, नहीं तो डेफिनेशन दे दो, जोड़ के उसके एक मीनिंग बनाओ. ऐसा मेनी लैंग्वेजेस फ्रॉम grade 3 to age 3 कर सकता है, तो यू विल इंप्रूव योर नॉलेज. तो हम क्या किया है चाइल्डहुड पे, वी हैव लर्न लॉट ऑफ श्लोकास. इवनिंग रोज सब फैमिली मिलके बैठना है, और प्रेयर, इवनिंग प्रेयर कंपल्सरी है. उसका मतलब क्या है वो टाइम पे मालूम नहीं है, बट अभी मालूम हो गया. ऐसा करने से क्या होता, हमारा दिमाग में स्टोर करने का एलोकेशन बहुत बड़ा हो जाता है.
वो एलोकेशन स्पेस बड़ा होने से नेक्स्ट व्हेन यू गेट नॉलेज, वो भरने के लिए जगह ऑलरेडी एलोकेट करके रखा है। ब्रेन ऐसा है, आप ज्यादा स्ट्रेच करो, बाद में इलास्टिसिटी इंप्रूव हो सकते, रबर बैंड का जैसा है, आप स्ट्रेच करते रहो, उसका इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाता है। आप बिना स्ट्रेच करके रखो, बाद में आप स्ट्रेच करने के लिए ट्राई करें तो टूट जाते हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो एवरी रिचुअल, हमारा पुराना जमाने में क्या होते थे, हमारा सनातन धर्म क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, वो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल। आप टेंपल पे जाते हो, टाइम पे बहुत लोगों को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, इन रिचुअल, आइदर वो बर्थ के बाद नहीं है तो डेथ के बाद, पूरा रिचुअल्स में सब लोग आ जाते हैं आपके पास। आपको फ्रेंडशिप है, एनिमिटी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो टाइम पे। सो एनिमिटी है तो भी एक फेस्टिवल है, किसी का शादी हो रहा है, यू इनवाइट दैट पर्सन, सो वो भी आ जाते हैं आपके पास। सो सोशल रिलेशनशिप बिल्डिंग, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एनी रिचुअल विच वी डू। पूरा फेस्टिवल इसके लिए है। होली के दिन हम नहीं देखते कौन आ रहा है हमारे पास, सबके लिए दरवाजा खोल के रखते हैं हमने। तो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, वो पूरा डेवलपमेंट सब लोगों को एक ही तरफ करने के लिए हमारा सोशल एक्टिविटी रहना है। चाइल्डहुड से इंप्रूवमेंट एजुकेशन पे होना है। एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए है, between students to student, peer groups communication. But then the last one is spiritual communication. How do you become great, a spiritual person? आत्मीय पुरुषा, आत्मीय पुरुषा ऐसे होता है, उसका इनर मीनिंग मालूम हो जाता, एक एक वर्ड का। आपका पूरा कर्म सकर्म हो जाता है। कर्म इज नॉर्मल एक्टिविटी, वो सकर्म हो जाता है। सकर्म इज, सा इज एडेड प्रीफिक्स्ड व्हेन एक एक्टिविटी आपको बढ़िया एक्टिविटी होना है, उसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका इंटेलेक्ट में कुछ आ गया तो अंत तक रहता आपके पास, फॉरगेटफुलनेस नहीं है आपको, कहा, कब, किसको कब मिला है, क्या हो गया वो टाइम पे। एक टच इज इनफ, वो टच, ए स्पिरिचुअल पर्सन व्हेन टचेस, द इफेक्ट ऑफ द टच विल बी ए ग्रेट इंपैक्ट। वो कब तक रहता, आप उसके बारे में एक बार सोचो, उसके साथ रहता। मेरा गुरु आके मुझे मेरा सिर पे एक बार हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया है। वो गुरु के बारे में सोचने के टाइम पे भी उसका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारे पास आ जाता। वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारे पास है तो हमको भी दूसरा आदमी को देने के लिए बहुत, उसका एफर्टलेस हो जाता है। बट सबको नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को मिलता है, उसको वो बेनिफिट और इफेक्ट होगा। वो डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वो मेजर करने के लिए नहीं, मुश्किल है, बट वो आपका पर्सनालिटी में एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है तो इम्पैक्ट वो मोमेंटरी नहीं होता, सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं होता, सिर्फ इमोशनल नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन करना, सोशल एक्टिविटी नहीं होता, बट उसको कैसे बताना, कैसे फील करना, वो पानी पीने के बाद आपको क्या मिलता है, उसका टेस्ट क्या था, वो बोलने का मुश्किल, ये स्पिरिचुअलिटी में भी, आत्मीयता में भी रहता। ये पूरा मिलके उसको एक सिद्धि बोलता, वो सिद्धि को मणिमादिष्ट सिद्धि बोलता है। वो मणिमादिष्ट सिद्धि क्या है, अणिमा महिमा चैव लेखिमा गरिमा तथा ईशित्वं च वशित्वं च प्राप्ति प्राकाश्यमेव च। अणिमा महिमा चैव, अणिमा इज छोटा, अणु, अणु आटम, आप आटम के जैसे छोटा हो सकते एक बार। आपका एक बड़ा आदमी के पास जाने के टाइम पे आप क्या करते,
छोटा आदमी बन जाते हैं आप। बॉस के पास सबऑर्डिनेट छोटा होता है, एंड व्हेन यू गेट अ सबऑर्डिनेट यू हैव टू शो योर बॉसिज्म, महिमा, वो आई एम ग्रेट, वो बोलने के कहां पे बोलना, कैसे बोलना, किसको बोलना, वो मालूम हो गया तो आपको बड़ा भी हो सकता है। अनिमा, महिमा। लेखिमा, गरिमा। वेट कहां दिखाना वो दिखा सकते, वेट कहां पे नहीं रखना वो भी कर सकते, सब लोगों को ये मालूम है। आपको एक लैडर दिया है, लैडर के ऊपर चढ़ना है, वो चढ़ने के टाइम पे आप देखा है उसका एक स्क्रू लूज हो गया, नहीं तो उसका नेल चले गया, उसको वो बांधा था, वो रोप को कुछ टूटा है, तो आपको मालूम है आप गिर जाने वाला है। कोई भी आपको वो लैडर पकड़ने के लिए हेल्प करने वाला आपका क्लोज रिलेटिव, आपका बेटा है, नहीं है तो बाप है आपके साथ, वो बोलते अब भी गिर जाएगा, सोच लो, देख लो, केयरफुल होना है। आप क्या बोलते हो उसको? मैं चढ़ रहा हूं बट मैं वेट नहीं दे रहा हूं, मैं चढ़ रहा हूं बट मेरा वेट नहीं दे रहा हूं। कैसे हो सकता है? मैं वर्कशॉप को जाते और टाइम पे बच्चों को मैं ऐसे ही उठा के और रोल करते, वो बच्चों नहीं है, बहुत बड़ा, मेरे से भी ज्यादा वेट है, 80 किलोग्राम वाला को भी मैं उठा के उसके ऊपर हम डांस भी कर सकते। कब? ओनली व्हेन वो दूसरा आदमी परमिशन दिया तो। परमिशन का मतलब क्या है? वो टाइम पे उसका वेट वो कम करते। आप एक स्विमर है, पानी के ऊपर स्विमिंग के टाइम पे बॉयंसी प्रिंसिपल पूरा चले जाता, बॉयंसी प्रिंसिपल इज वैलिड नहीं है उसमें। क्यों? मेरा एक कजिन ब्रदर है, ही कैन स्लीप ऑन वाटर, ऐसा ही आवर्स टुगेदर, वो सिंक नहीं होता, विदाउट स्विमिंग ऑल्सो स्टेबल। कैसे हो सकता है? बॉयंसी प्रिंसिपल का ऑपोजिट है वो, कुछ भी डालो पानी में वो नीचे गिर जाते हैं। बट ह्यूमन बीइंग हैव दैट एबिलिटी, ह्यूमन बीइंग को है वो एबिलिटी। क्यों? वी कैन होल्ड एयर एंड देन स्टे देयर फॉर लॉन्गर टाइम। स्पिरिचुअल पावर है वो। सो स्पिरिचुअल पावर ऐसा है, ऐसा डेवलप कर सकते हैं आपको वो, वेरी इजी। सच पीपल व्हेन दे स्पीक, व्हेन दे टच, व्हेन दे कम्युनिकेट, इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। सो अनिमा, महिमा, लेखिमा, गरिमा। लेखिमा इज वेटलेस, गरिमा इज वेटफुल। ऐसा है, सपोज somebody wanted to lift me, I say you cannot lift me, but you can lift equivalent to my weight 60 kilogram, you can lift any object. If I don't permit, you cannot lift me because I can change my weight. एक लॉन्ग जंप वाला क्या करते, वो रनिंग करते, उधर से वो लास्ट स्टेप से वो जंप करते, वो टाइम पे आप एक वेइंग मशीन लगा के उसको देखे तो इफ आई एम 60 किलोग्राम, वो टाइम पे मेरा वेट 120 हो गया तो आई कैन जंप लिटिल। वो टाइम पे मेरा वेट 183 टाइम्स है तो आई कैन जंप मोर। इफ आई कैन गिव 5 टाइम्स वेट आई कैन जंप मच बेटर। तो हाउ मच आई कैन जंप, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वेट आई कैन गिव। वो जंपिंग के पहले मेरा फुट में कितना वेट आता, वो वेट के हिसाब से आई कैन जंप फास्टर। हाउ कैन यू चेंज योर वेट? दैट इज अवर स्पिरिचुअल पावर। सो ए लॉन्ग जंप, हाई जंप वाला, ए स्विमर वाला वेट लेस करते, हाई जंप लॉन्ग जंप वाला वेट मोर करते। आपको भी कर सकते, आपको लिटिल कर सकते हैं, बाकी दूसरों को बड़ा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्टोरी है, हम हिमालय पे जाके, कैलाश जाके, मेरा गुरु के साथ में कैलाश परिक्रम के लिए गया था। और टाइम पे मैं एक क्वेश्चन पूछा मेरा गुरु को। हम फ्लाइट पे काठमांडू जाके उधर से नो लैंड क्रूजर गाड़ी पे पूरा माउंटेन क्लाइंब करके चढ़ के पूरा हेलीकॉप्टर में जाते, नहीं है तो उधर पहुंच रहे थे। शंकराचार्य केरला से कैलाश तक कैसे पहुंच गया? वो टाइम पे पैदल जाने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल पड़ता, वो उतना टाइम भी नहीं लिया, कैसे हो गया वो उसका आंसर यही था। अभी मैं एक श्लोक बोल रहा है, वो टाइम पे कैलाश से मेरा गुरु ने मुझे एक क्वेश्चन के आंसर के ऐसा बोला है, वो श्लोक ये था, अनिमा महिमा चैव लेखिमा गरिमा तथा ईशित्वं तवशित्वं च प्राप्ति प्रकाश्यमेव च। वो क्या है?
ये विंड आने के टाइम पे शंकराचार्य विल बिकम वेटलेस, नॉर्थ चले जाते, ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड आ गया तो विंड शुड नॉट टेक यू बैक, यू विल शो योर वेट एंड बिकम ए नॉर्मल पर्सन। सो कहां पे विंड आता, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना, विंड के साथ आप चले जाते। ए ह्यूमन बीइंग कैन ट्रैवल इन विंड, वो शंकराचार्य कर सकते थे, हमको नहीं कर सकते। वो श्री कृष्णा का कहानी पे हम सुना है, श्री कृष्णा हैज बिकम स्मॉल, श्री कृष्णा हैज शोन द होल वर्ल्ड इन हिज माउथ, वो भूलोग भी उसके नो माउथ पे दिखाया था। सो दैट मीन्स द होल ग्लोब इज इनसाइड हिम। भगवत गीता में आपको एक चैप्टर भी है, विश्व रूप दर्शनम, आप इतना बड़ा हो जाता, पूरा विश्व आपके अंदर है। श्री कृष्णा को वो भी दिखाने के लिए सिंपल था उसके लिए, उसको छोटा होना भी बहुत आसान था, क्योंकि यू नो द स्टोरी ऑफ कृष्णा डांसिंग ऑन द साइफन ऑफ ए स्नेक। You cannot be big as a person and then dance on a snake siphon, right? That means वो टाइम पे क्या था, कृष्णा छोटा था। कृष्णा का पिक्चर भी है आपको, एक लीफ के पत्थर के ऊपर आप वो सो रहे थे, इतना छोटा भी था वो। तो आप स्पिरिचुअली बड़ा है तो यू कैन बिकम स्मॉल, यू कैन बिकम बिग। सो डेवलपमेंट में फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, बस है। वो बोल कितना साल तक बोलना है, कितने महीने तक बोलना है, बोल सकते हैं, बट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट वो होता है क्वेश्चंस और आंसर्स। जी डॉक्टर साहब, सो ये एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मैत्री इज आस्किंग डॉक्टर साहब, हाउ टू मेजर द मैच्योरिटी लेवल ऑफ ए पर्सन, प्लीज कोट सम एग्जांपल्स। मैच्योरिटी हम मनम दर्पण समानम, मनम दर्पण समानम, शंकराचार्य ने बोला है, मनस, our mind is like a दर्पण, we reflect, रिफ्लेक्शन के हिसाब से। आई एम ए स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल बेबी है मैं, किसके साथ, मेरा मम्मी के साथ। when I see my mom, when I see my mom, the mother is beside me, मैं एक छोटा बच्चा होते उसके लैप में जाके सो जाते। I don't show that maturity, but when I see my son, I show my maturity। अब भी वही बोला मैंने, अनिमा, महिमा, लेखिमा, गरिमा, ईशित्वम, वशित्वम। ईशित्वम का है, when I see a lot of people who are listening to me on lecture, I show great maturity so that everybody get attracted to me। बट व्हेन आई गो टू माई गुरु, मैं गुरु के पास जाने के टाइम पे मेरा मैच्योरिटी नहीं है, मैं छोटा बच्चा होता है उसके पास। मेरा दिमाग भी छोटा है, मेरा नॉलेज भी छोटा है, मेरा इमोशनल फीलिंग छोटा बच्चे के जैसा है मेरा मेंटर के पास। मैं किसी को साथ रहना है, वो फीलिंग है तो मैं छोटा होना है। सो दैट कैन बी योर सन, you can be a father showing lot of maturity, you are a great person, बड़ा बड़ा मैसेजेस देता है, बट एक दिन आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, आपका बेटा आपके पास है, क्या करेंगे आप? बेटा नहीं है तो बेटी आपके पास है, क्या करेंगे? यू उसका गोद में जाके हम सो जाते हैं ना, तो दे बिकम मोर मैच्योर्ड। वो बच्चा आपको ऐसे बात बोलते हैं, पापा आप घबराने का जरूरत नहीं है, लाइफ ऐसा है, पूरा कहानी आपको बोल देंगे। वो कौन मैच्योर्ड होता? आप छोटा बच्चा होता है, वो मैच्योर्ड होता है उसके पास। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैच्योरिटी इज लाइक ए बैंक चेक, देयर इज नो ओपन चेक। आप किसको कितना देना है वो लिखना है बस। इट इज लाइक ए करेज, कब करेज होना, कब करेज नहीं होना है वो भी मालूम है। You cannot be so courageous and jump in front of a running train, na? That becomes foolishness. So don't show your maturity when you should not show. You have to be simple. You have to be very, 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 very low level without maturity. That ability is ईशित्वम वशित्वम। अभी एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं दिया श्लोक का, वो क्वेश्चन राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन आ गया। ईशित्वम वशित्वम, ईशित्वम is I become very small,
Vashitva means I can control a lot of people and then I become the master. So that time I am a matured person. Prapti Pragashyame Vaja. These qualities are called Manimadishta Siddhigal. Thank you. Beautiful question. Yeah. Dr. Saab, next question is from Healthy Lifestyle India. Dr. Saab, how far the mantra chanting helps in personality development? It is not mantra. हमारा क्लास स्कूल क्लास पे वी मस्ट हैव लर्नड लॉट ऑफ लेसन्स. वो पैराग्राफ वाइज 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ नहीं है तो 3 पेज 4 पेजेस एक आर्टिकल रहता है. कहानी है किसी का भी, कुछ स्टोरीज नहीं है तो कुछ किसी का बायोग्राफी, बट वो हमारा दिमाग में नहीं रहता. वेरी रेयरली पीपल कैन रिमेम्बर पैराग्राफ्स, बट पूरा पोएट्री सॉन्ग्स उसका एक रिदम है. वो रिदम कैसे रहता है? ए लॉन्ग स्टोरी कैन बी पुट इट इनटू ए स्मॉल श्लोका. अभी मैं मणिमादिष्ट सिद्धिगल, ये पूरा सिद्धिगल मेरा मन पे कैसे स्टोर किया है, एक श्लोक और उसका एक्सप्लेनेशन 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, एक्सपैंड कर सकते हैं. सो श्लोका पोएट्री उसका मीनिंग के साथ पढ़े तो, इसका मीनिंग के साथ इट हेल्प्स यू अलॉट. विदाउट मीनिंग आप पढ़ लो, आपका मेमोरी में, मैं बोला ना अलोकेशन होने के लिए इजी है, बट अलोकेशन सिर्फ नहीं, पर्पस नहीं, सर्व नहीं होता. एक प्रोसेस के लिए एक पैरामीटर स्टोर करके रखने के लिए अलोकेशन चाहिए. प्रोग्राम प्रोसेस आप कब वो अलोकेटेड मेमोरी यूज करता वो टाइम पे हो सकता है. सो ऐसा है, पूरा श्लोक पढ़े तो यूजफुल नहीं है, बट मेमोरी एलोकेशन के लिए, मेमोरी के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऐसा भी बोल सकते हैं. देयर आर ब्ला 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 बिग वर्ड्स व्हिच आई डोंट जनरली यूज. वो अच्छा हो सकते, गुड, बट इट हेल्प्स यू टू रिमेम्बर थिंग्स. रिकॉल करने के लिए, किसी दूसरे टाइम पे यूज करने के लिए इजी हो सकता है. ओनली व्हेन उसका मीनिंग purposefully, when you understand the meaning. Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. This is called Maha Mantra. अजीत, आपको उसका मीनिंग मालूम है? बताइए डॉक्टर साहब प्लीज. Everyone who knows chanting this, I think all the people in India, because this is called Maha Mantra in Kalikala. You don't have to take पूरा बहुत बड़ा स्वामी रहता, वो मंत्र देता है लोगों को. आई विल गिव यू ए मंत्र, श्लोका देता है, दिस इज द बेस्ट मंत्र बोल के. ये बहुत बढ़िया नो वर्ड्स रहता है, लॉन्ग मंत्र रहता है, 1000 नेम्स रहता है. वो पूरा महामंत्र नहीं है, एक ही महामंत्र है कलिकाल में. हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. वो कृष्णा रामा का एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया होगा, वो अलग बात है, बट दिस हैज अ ग्रेट मीनिंग. But most of the people don't know the meaning. Hare Rama, Hare Krishna. If anybody knows, I love to get the meaning on the chat. Somebody can tell me the meaning. सोच लो एक बार, हरे राम हरे कृष्णा. अभी तक सोचा नहीं है तो सोच लो अभी. हरे राम हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे रामा. ओ इस्कॉन वाला उल्टा बोलते, फर्स्ट कृष्णा देन रामा. उसके लिए राम इंपॉर्टेंट नहीं है. जनरली इट इज हरे रामा फर्स्ट. हरे राम हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. दिस इज इनफ. पूरा मंत्र का जरूरत नहीं है. कीप ऑन चैंटिंग. व्हाट डज दिस चैंटिंग मीन? Dr. Saab, there's one comment, Dr. TPS. I chant this mantra every day, but I don't know the meaning. When you are young, you chant the mantra, but every mantra, when you don't know the meaning, ask somebody else. मैं भी किया था मेरे लाइफ में. मातरम में मदगेड भक्ति में शप्राणा महारुद्ध में हेला तुमरा तुमरा लोचन देहे जन्म नारदनी निश्चेषी कृत बीजनजे नित्य संभावगे. ऐसा बहुत बड़ा बड़ा श्लोक में चाइल्डहुड पे कंपलसरी श्लोक पढ़ना है, चैंटिंग करना है रोज इवनिंग, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. बट उसका मीनिंग आफ्टर 40 इयर्स मालूम हो गया मुझे. इसका मीनिंग है हरे 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 हरे. स्टील मी
मेरे चोरी करके लेके जाओ आप। कौन लेके जाना है? हे रामा, हे कृष्णा, मुझे चोरी करके लेके जाओ आप। चोरी करके लेके जाओ। क्यों? मैं आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। हमको सबको मोक्ष चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, बट मरने के लिए तैयार नहीं है हम। आप भगवान के पास जाने के लिए रेडी है? ओके, अभी जाओ। रेडी है क्या आप? नहीं, मैं अभी नहीं, तैयार नहीं है, बाद में आएगा। तो हम कभी भी रेडी नहीं है। ओल्ड एज पे यू कैनॉट इवन ब्रीथ, लास्ट ब्रेथ तक हम तैयार नहीं है। तो हम क्या पूछ रहा है? भगवान, मुझे चोरी करके आप लेके जाओ। मैं तमाशा बोलते एक एक बार नो, हंसने के लिए बहुत अच्छा मौका भी मिलता मेरा लेक्चर पे। मैं बोलते हैं नाइस प्रटी गर्ल्स इवनिंग पे घर पे मुझे चोरी करके लेके जाओ रामा, मुझे चोरी करके लेके जाओ कृष्णा बोल के रिपीटेडली बोले तो क्या होता है? आपका नेबर कोई रामा कृष्णा है तो वो चोरी करके लेके जाता आपको। बाद में बाद में आपको पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि वो रिकॉर्ड करके रखते हैं, रामा चोरी करके मुझे लेके जाओ बोल के आप रिपीटेडली बोला ना, इसलिए मैं चोरी करके लेके गया बोलते, किडनैप कर दे आपको। करेक्ट? सो आपको मालूम नहीं है, मीनिंग मालूम नहीं है, क्या फायदा है? सो एटलीस्ट थिंक नाउ, थिंक लिटिल बिट। सो मंत्र इंपॉर्टेंट है, बट उसका मीनिंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देना है। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब। Good noon, Dr. TPS and Ajeet sir. I request Dr. Saab to quote some inspirational real life incidents which has deeply impacted you. Sorry, both. Every day there is something else. Every moment there is something else which is happening. Every there are a lot of incidents which happens. मेरा लाइफ में इतना सारे इंसिडेंट्स है। मेरा वैदिक गुरु है ब्रह्मश्री केपीसी अनिजन पटदरीपाड़। 2002 जून पे मैं मिला था उसको। 2002 हाउ डिड आई मीट हिम? एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज बोल के एक इंस्टीट्यूशन है केरला पे, उसका डायरेक्टर ने एक लेटर भेजा, एक कार्ड, लेटर भी नहीं है, पोस्ट कार्ड में ओपन कार्ड पे लिख के मेरा गुरु को भेजा है। वो लेटर था डॉक्टर टीपीएस केरला पे, वो मंथ ये डेट के बीच में रहता है इरिंगालकुड़ा बोल के एक जगह पे, उसको जाके मिले तो आपको फायदा मिलता। किसको बोल रहा है? मेरा गुरु को। मेरा गुरु को बोल, और टाइम पे मेरा गुरु नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो कौन है बोल के, बट दैट वाज अ ग्रेट पर्सन। महर्षि महायोगी के पास जाके एक साल उसके साथ रह के केरला तंत्र शास्त्रम पढ़ाए, या पूरा बताया मेरा गुरु ने। उसको एक कार्ड मिल रहा है। वो कार्ड मिलने के बाद वो टाइम पे मेरा घर पे टेलीफोन भी नहीं था, नॉट माय हाउस, मेरा वाइफ के घर पे टेलीफोन भी नहीं था। दूसरा नेबर उसको पहचान वाला कोई था, उसको फोन करके बोला है वो मेरा टेलीफोन नंबर, मेरा एक टेलीफोन का इंफॉर्मेशन आ गया, वो मुझे देखने के लिए मेरे पास आ रहा है बोलकर। व्हाट अ ग्रेट इंस्पिरेशनल एक्टिविटी। महर्षि महायोगी का गुरु मुझे देखने के लिए मेरे घर पे आके मुझे मिल रहा है। वो बोलने के बाद उसका नो मुझे मालूम नहीं था ये ब्रह्मश्री केपीसी अनिजन भट्टाचार्य कौन है बोल के, बट देन मेरा फादर इन लॉ सब इंक्वायरी करके ये आदमी आ रहा है आपको देखने के लिए। तो एज द गेट ओपन में क्या किया, उसके सादर प्रणाम करके उसके आशीर्वाद के लिए उसके नीचे आई जस्ट डिड माई पोस्ट्रेशन। वो टाइम पे मैं बोला, अभी हाथ मेरा सिर के ऊपर डल के वो आशीर्वाद दिया है, दैट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। वो पहले एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था क्लैरियंस, अतीन्द्रिय ज्ञानम के बारे में डॉक्टर टीपीएस का। व्हाट इज दैट यू वांटेड टू स्पीक ऑन टॉपिक टू मी? एक्चुअली मैं हैदराबाद से ट्रेन पे
केरला तक जाते जाते में बुक लिख रहे थे, वो लास्ट चैप्टर था ए चैप्टर, अदिंद्रियत्नान, क्लैरियंस. How did he know that I am thinking on this topic, writing a book on this topic? वो भी rough writing start किया वो time पे. How did he know that this is what I am writing? That is what the knowledge of a guru is. And such a guru came to meet me and blessed me. There are a lot of such inspirational things which turned me from a normal space department scientist to a person who is in search of spirituality, is in search of knowledge, in search of Bharatiya Shastra. Because there are so many such things. Yeah. My meeting of Swami Vedabharati bhi aisa bhi tha. It's also a beautiful incident. मैं कोई भी YouTube पे मैं बोला था किसी को उसका स्टोरी भी वो भी ऐसा ही एक स्टोरी है. So, Dr. Saab, I've heard, I am not sure, so you are the better person because you just mentioned space scientist. So you are a space scientist, everyone knows that. So ऐसा लिखा है क्या कि विमान पुराण कुछ है जिसमें कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि विमान कैसे बनाया जाता है, और एक ये someone mentions कि someone actually from India, I think Marathi person from Maharashtra, he flew the flight in front of so I think Maharaja of Jamnagar on the banks on the beach of Mumbai way back before Wright brothers did that. So is that true, Dr. Saab? What do you say? Wright brothers नहीं है, wrong brothers invented aircraft. वो चोरी करके लेके गया था इंडिया से. So that's true. So Wright brothers or wrong brothers invented aircraft in 1903. Very easy to remember these years. मुझे कुछ रेफर करने का जरूरत भी नहीं है बिकॉज ये पूरा इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में मेरा लेक्चर्स बहुत सारे हैं. 1903 के पहले 8 years बिफोर, 8 years बिफोर इसका मतलब है 1895 चौपाती बीच इन बॉम्बे एक फ्लाइट फर्स्ट ट्रायल था उधर. एंड ही वाज ए जर्नलिस्ट, मराठी जर्नलिस्ट था. एंड दैट हैज कम इनटू 2-3 मूवीज. एक केरला वाला भी एक मूवी लिया है, विमान. किसी को चाहिए तो आई विल रेफर दैट. एंड दैट एयरक्राफ्ट हैज फॉलन and he could not make it a successful. So uska paisa bhi nahi tha uske paas. Then he has given an advertisement in the paper saying that मेरा एक ट्रायल रन हो गया है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, कोई हेल्प करने के लिए तैयार है तो आई विल बी वेरी ग्लैड बोल के एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया था उसने. But nobody has given payment, nobody has helped him. So what has happened? He has left without any answer. उसके बाद वो फ्लाइट भी नहीं था, वो भी नहीं था, उसका कहानी भी नहीं था. That is seen as a beautiful movie. But anybody knows विमान, aircraft, उसका definition क्या है? We have a Vimana Shastra. We have a dictionary of missions. Varaha Mihira का एक टेक्स्ट बुक है. And it has got lot of equipments, including spectrometer है उसमें, different colors of light. And ये पूरा हमको भी पता है, वर्ल्ड को भी पता है, बट उसका लाइट में नहीं आया. कोई भी वो लेके उसका रिसर्च कंटिन्यू नहीं हो गया, तो इसलिए वी लॉस्ट दैट. द डेफिनेशन ऑफ विमाना इज ब्यूटीफुल. वी हैव विमाना का एक डिस्क्रिप्शन
रामायणा पे भी है, इट मे बी 10 lakhs years old, बट वो कहानी के बारे में नहीं बोल रहा मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इतिहास पुराण. डेफिनेशन इज ब्यूटिफुल. देश देशांतरम यद्वक, एक देशा से दूसरा देशा तक जाने के लिए देश देशांतरम यद्वक, यू हैव 3 मोड्स. एक है लैंड, वाटर, एयर. 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है. देश देशांतरम, एक देशा से दूसरा देशा तक जाने के लिए, एक प्लेस टू दूसरा प्लेस तक जाने के लिए 3 मोड्स है. तो विमानन डेफिनेशन के लिए मैं क्या करना, पहले लैंड को डिस्कार्ड करना है. तो कैसे हो सकता है? द्वीप द्वीपांतरम चैव, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड तक कैसे जा सकते हैं? तो एक ऑप्शन चले गया. 2 ऑप्शन है. किस कंपटीशन का जैसा है ये मंत्रा? एक ऑप्शन चले गया, 2 ऑप्शन है अभी, एक लैंड एक वाटर. और वाटर का ऑप्शन का भी मैं निकालना है. तो क्या किया? यो अंबरे गंधुमर्हसी, विच कैन in the air, that is vimana. Sa vimana iti prokta. This is what is called vimana. What a beautiful definition. Dvipa dvipantaram chaiva, desha deshantaram yadvak, dvipa dvipantaram chaiva, e ambare gandumarhasi, sa vimana iti prokta. You ask a definition of a vimana aircraft with the modern technology, the greatest people, including हमारा एलन मस्क को पूछो, ये डेफिनेशन नहीं आता उसको. व्हाट इज विमाना? एक श्लोक के हिसाब से बोलना है तो यही करना है. सो जी डॉक्टर साहब, since yeah, जी डॉक्टर साहब, since you mentioned एलन मस्क और स्पेस की बात हम कर रहे हैं अब, तो और मैंने देखा डॉक्टर साहब जो आपने बात की ना, जो हमारे शास्त्र, जो विमान शास्त्र में है, इट्स वेरी ब्यूटीफुली, यू नो, एवरी द पिक्चर इज, आई हैव सीन द, you know, I've just did a small bit of seeing that picture, Viman ka. It's beautiful. It's like layered, and it's in the way the UFOs are right now. People mention about UFOs, and I don't know how many viewers know this, but actually, Pentagon has officially confirmed that yes, there are UFOs and there are some very strong aliens which are actually protecting us. So aliens हैं, क्या बोल देंगे हिंदी में इसको, कि दूसरे ग्रह के लोग हैं जो हमारे को बचा रहे हैं, एक्चुअली सुरक्षा में रख रहे हैं. तो बहुत फैसिनेटिंग टाइम्स है कि फाइनली उन्होंने मान लिया है. और अगेन हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस में हमारा जो अर्थ है बिल्कुल इवन एक छोटे से तिनका भी एक डॉट जैसा है पूरे स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में. और उसमें जब मेरा एक पर्सनल व्यू है डॉक्टर साहब, उसमें जब ये ऐसा वो हनुमान चालीसा में से बोलते हैं कि क्या बोला कि उन्होंने फल खा लिया था हनुमान जी ने सन को. सो लोग, और जब जैसे अभी आप कृष्ण का भी, भगवान का भी बोल रहे थे कि जब उन्होंने पूरा अपना पूरा रूप दिखाया तो उनके मुंह में भी भूगोल था. सो ये लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बखान किए हैं हमारे वेदों पुराणों में, वो सारा कुछ उन्होंने देख के सब कुछ लिखा था, ऐसे नहीं. वो सब कुछ पीयर रिव्यूड सिस्टम होता था उस टाइम भी, आई थिंक सो. और मैं बोलता हूँ कि जो मॉडर्न साइंस है वो बोलता है जब विच यू कैन नॉट प्रूव इज नॉट साइंस. लेकिन आप ये बात मानते हो कि द अर्थ इज जस्ट अ डॉट इन द होल कॉस्मोस थिंग, और उसमें एक्चुअली अगर किसी को छोड़ दिया जाए स्पेस में तो यू कैन नॉट इवन फाइंड अर्थ की है कहाँ पे. तो उसमें जब हम ये बात करते हैं कि हनुमान जी ने जाके उनके पास 8 सिद्धियां थी, और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, और लिलियो ताही मधुर फल जानी, जो उन्होंने सूरज को मीठा फल समझ के ले लिया था, निगल गए थे. तो I don't think it is incomprehensible. Like for more science, it may be, but once you start learning things from the spiritual point of view, and even from scientific point of view, Dr. Saab, I say that if you really understand the cosmos, how huge it is, and it is ever expanding, and Earth is so small. So, what's your take on that, Dr. Saab? And then I'll ask you the next question myself about because we just spoke about Elon Musk. या बीच में महाराष्ट्र का फ्लाइट विमान का स्टोरी भी बोला है, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन उसका नाम.
Shivakar Bapuji Dalpate or Dilpate, that is his name, who has invented aircraft 8 years before Right and Wrong Brothers. तलपड़े था डॉक्टर साहब, तलपड़े. Talpate, that Dalapate or Talpate, that spelling can be different and pronunciation can be different. Yeah. But Bapuji, Shivakar Bapuji Dalpate, that is his name. आप एक क्वेश्चन पूछा है, हमारा टेम्पल पे रोज महासंकल्पम बोल के एक चैंटिंग रहता. वो महासंकल्पम के चैंटिंग पे एक्चुअली जियोग्राफी पूरा बताते उसमें. वो जियोग्राफी क्या है? ब्रह्मांडानाम मध्ये, इन द होल ब्रह्मांडा, ब्रह्मांडानाम मध्ये, then it will tell you जम्बुद्वीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे, मेरोह दक्षिणे पार्श्वे, ऐसा. that is geography actually. ब्रह्मांडा is the full Milky Way galaxy. उसमें जम्बुद्वीप ओनली एशियन, द भूमि, और उसमें एशिया, जम्बुद्वीपे, भरतखंडे, इन दैट कॉन्टिनेंट, भरतखंडे भारतवर्षे, इन दैट पोर्शन वर इंडिया और भारत, भरतखंडे भारतवर्षे, मेरोह दक्षिणे पार्श्वे, मेरु इज कैलाश, कैलाश के साउथ पे, दक्षिण में साउथ. हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज दिस श्लोका? उसका आंसर अजीत जी में यही बोलता है, आपको कुछ भी आंसर मालूम नहीं है तो आपका मदर टंग पे सेकंड लेटर इज द आंसर. कुछ लेक्चर सुनने के लिए फर्स्ट लेटर मालूम होना है. हाँ 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 हाँ. कुछ क्वेश्चन पूछे तो आंसर मालूम नहीं है तो सेकंड लेटर. हाँ. सो हाउ ओल्ड इज दिस श्लोका? सेकंड लेटर इज द आंसर. हाँ. दिस इज एवरीडे चैंटिंग. कोई भी टेंपल पे जाओ, फर्स्ट जियोग्राफी. सेकंड वन इज सप्तपद मन्वंतरे कलिकाले प्रथम पादे, सप्तपद मन्वंतरे, इन Manvantaras, 17 Manvantaras is over. And each Manvantara is 4,32,000 Kaligala, multiply by 2, 8,64,000 Dwapara Yuga, multiply by 3 times Treta Yuga, multiply by 4 times Satya Yuga. So 4 plus 3 plus 2 plus 1, 10. 10 times Kali Yuga is 1 Yuga, Mahayuga. 2 Mahayuga is 124 hours for Brahma. And 365 days of Brahma multiplied by 365 multiplied by 120 years. 1 Purusha is for Brahma. And all that together becomes 1 Manvantara. Similarly, 17 Manvantaras are over. All that if you compute, you will get nearly 193 crores of years. Wow. This is exactly or almost matching with the modern Earth life or life on Earth. Yeah. एक चैंटिंग कहाँ होता है? एक एक टेंपल में रोज पुजारी ये चैंटिंग करना है, कर रहा है. कब से? मिलियंस ऑफ इयर्स. कोई सुना है? सब लोग सुना है. कोई पूछा उसका अर्थ? कोई पुजारी को उसका अर्थ मालूम है? किसी को भी मालूम नहीं है. दैट इज अवर प्रॉब्लम. सो इट इज नॉट हमारे पास नहीं है बोल के नहीं है, सब है. साइंस भी है, बट ये साइंस है बोल के हमको मालूम नहीं है. हमारे पास ये पूरा सिर्फ चैंटिंग है, मंत्रा है, पूजा है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है. पूरे रिलीजियस लोगों को भी ये मालूम नहीं है. सो आपने ये पूछा है वेदर लाइक बिग बैंग थियरी. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क्ड. अजीत ने यही पूछा है, बिग बैंग थियरी. एक स्मॉल स्पूट से एक बड़ा लॉग कैसे बना है, वो इज दैट ट्रू इज व्हाट यू हैव आस्क्ड. यही क्वेश्चन मैंने मेरा गुरु को पूछा था मे बी 20 years बैक. दैट्स द ओनली डिफरेंस. वो टाइम पे भी पूरा श्लोक में है. whichever आंसर आई गेट आंसर ओनली इन श्लोकास. वो श्लोक क्या था? आई एम रेफरिंग इट. डोंट थिंक दैट मैं पूरा बाय हार्ट करके लिखा है, इधर पेंसिल पे लिखा है. ओनली थिंग आई नो हाउ वेयर टू लुक फॉर इट. विक्रमादित्य
480 टाइम पे, मे बी कालिदासा कुमार संभवम बुक पे, कुमार संभवम कालिदासा हैज रिटन यदमोघम अपाम अंदरुक्तम बीजम अजत्वया अदश्चरा चरम विश्वम विश्वम. The whole universe is charam. Charam is moving, ever expanding. अजीत जी ने अभी बोला है, वही पूछा है. Charam, charam is moving. What is moving? Vishwam. Vishwam is charam. The whole universe is moving. Milky Way galaxy is moving. Such many Milky Way galaxies are moving. Ajah Twayam Adaschara Bijam. It all started from a small bijam, small seed which expanded. Apamandaruktam Yatamokham. A spontaneous break of energy. एक एनर्जी था, वो ब्रेक करके एक पटाखे जैसे एक बीजम, एक स्मॉल बीजम सीड एक्सपेंडेड एंड बिकम द होल यूनिवर्स. ओ विश्वम चरम, वो मूवमेंट होते रहता है. प्रभावस्तस्य इति गीयते. ये कालिदासा ने बोला है, बट कालिदासा उसका क्रेडिट नहीं ले रहा है. वो क्या बोल रहा है? प्रभावस्तस्य, मेरा पूर्विकास, all predecessors who are great knowledgeable people, इति गीयते, ऐसे गाना गाते थे और ऐसे श्लोक बोलते थे, वो मैं सुना है, इसलिए मैं कुमार संभवम पे वो कोट करके बोल रहा हूं आपको. वो कुमार संभवम से कोट करके मुझे मेरा गुरु ने भी सिखाया था. मेरे पास उससे अच्छा आंसर नहीं है. Beautiful, Dr. Saab, beautiful. And that's what I say, Dr. Saab, कि see, even आपने उसमें से कोट करके बता रहे हैं आप, और ऐसे में हमारे को ये पश्चिम ने बता दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने बता दिया कि आप लोग सबसे पिछड़े हो, आप लोगों के पास कोई साइंस नहीं है, आप लोगों के पास कोई कल्चर नहीं है, आप लोग गरीब, पॉवर्टी रिटर्न और मिट्टी में रहने वाले, गोबर को यूज करने वाले, गाय को पूजने वाले, और हमने मान लिया. और हमारे वही, इसीलिए एक चैनल का ये भी मेरा ध्येय है डॉक्टर साहब, माय मिशन इज कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, यू शुड फील प्राइड इन योर कल्चर, इन योर thousands, you said millions of years, maybe, I go around maybe 50,000 years, that's still debate going on. We should take pride in this, and we should not look for certificates from the West anymore. That's my thing. Stop taking certificates from the Western world now. हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो वेद पुराने, हजारों लाखों साल पुराने हैं, किसी को नहीं पता है. रिटन डॉक्यूमेंट है. व्हाई आर वी लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट कि हमारे को वो सर्टिफिकेट देंगे तो हम मानेंगे? विमान शास्त्र आपने बोला, हर आयुर्वेद में बोलता हूं कि दुनिया का बेस्ट मेडिसिन वे है. तो आई डोंट नो डॉक्टर साहब, इसके बारे में कैसे हम अपनी जनरेशन को जगाएं, नेक्स्ट जनरेशन को, कि भैया, इसीलिए मैं बोलता हूं माँ बाप को कि भैया प्लीज अपने बच्चों को ये सब चीजें बताइए कि हमारा कल्चर कितना रिच है, और हमारा एक्चुअल जो वेद पुराण है वो साइंस है, और जो ऋषि मुनि है वो एक्चुअली हमारे साइंटिस्ट थे. दैट्स माय पर्सनल टेक. व्हाट डू यू से अबाउट दैट डॉक्टर साहब? अजीत जी, ये लाइफ इज मेटीरियलिस्टिक लाइफ. हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट होते थे, था बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, पूरे लोग हर जगह से इधर आके पूरा सीखने के लिए कोशिश किया था. सबसे अच्छा क्लोथ साड़ी ऐसा था, एक छोटा मैच बॉक्स पे डाल के ले सकते थे, उतना थिन साड़ी भी बनाते थे इधर. कहते हैं अंगूठी में से या मेटलर्जी भी है हमारे पास. बेस्ट सोड वाज प्रिपेयर्ड इन इंडिया. अभी मेटलर्जी के बारे में, सोड के बारे में, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन नॉट फॉर डिजीज, मेडिसिन फॉर लाइफ, बेटर लाइफ पूरा है. मे बी ऑल साइंटिस्ट उसके साथ पूरा काम किया है, वो डेवलप किया है. नागार्जुना बस आंध्रा का एक बहुत बड़ा मेडिकल साइंटिस्ट था.
केमिकल इंजीनियर था, केमिकल साइंटिस्ट था. ही इज द मैन ऑफ केमिस्ट्री. 13th सेंचुरी पे था आचार्य नागार्जुन. उसके बाद उसके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है गुंडूर के आंध्र प्रदेश में. आचार्य नागार्जुन, ही इज कॉल्ड आचार्य. आचार्य मतलब वो प्रैक्टिशनर था, आचार्य नागार्जुन. उसने बोला है एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करने का जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस करके प्रूव करो. साक्षात अनुभवैर्दृष्टो न श्रुतो न गुरुदर्शितः लोकानाम उपकाराय एतत् सर्वं प्रदर्शितम्. लोगों को यूजफुल है वो साइंस होता है. Psychology is a science because it is not to be proved. For each person, the medicine can be different. Each experience can be different. Feelings can be different. So, that was the science which we had. But आजकल कौन जीत रहा है? अजीत जी, आप अजीत हैं. कौन जीत कर रहा है? अभी देख लो, मेरा इंटरव्यू में 300 पीपल विजिबल है. नहीं है तो मेरा सब्सक्राइबर्स में एक मे बी ओनली 300 पीपल, और मे बी व्हेन आई पुट ए वीडियो 30 पीपल आर सीइंग. सो शशि कुमार इज नॉट फेमस, ही इज नॉट अ नॉलेजेबल पर्सन. आप 3 लाख करो, नॉलेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, आप पैसा कमाते हैं. यू कैन अपॉइंट पीपल टू टेक दिस टू. सो एडवर्टाइजमेंट मटेरियलिस्टिक, दैट बिजनेस मेंटालिटी वेस्टर्न सोसाइटी पे ज्यादा है. So they started selling all what we have. हमारे पास क्या क्या था उसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज उसने लेके गया है. हमारा उपनिषद में वेदास, 4 वेदास आर विथ अस सेफ, but vedas are not important. More important is upanishad, question answer. Lecture is not important. Veda is lecture, text knowledge. Question answer is upanishad. Upanishad means sit beside me and learn, ask questions and learn. वो पूरा उपनिषद हमारे पास कितना है हमको भी मालूम नहीं है. That may be hundreds and thousands. उसमें से 90% would have been stolen by westerners. चाइनीज लोगों भी लेके गया था. हमारा विमान शास्त्र पूरा चाइनीज. रेसा इज मर्कुरी. मर्कुरी वाज यूज्ड एज फ्यूल हमारा एयरक्राफ्ट पे. उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है अभी. दैट इज ओनली विद चाइनीज पीपल. दे आर डूइंग रिसर्च ऑन दैट. ये पूरा क्यों लेके गया? बिकॉज वी वर सेलिंग ऑल दिस फॉर स्मॉल बेनिफिट्स टू समबडी एल्स. हमारा पूरा साइंटिस्ट पोएट्स थे. वो पूरा साइंटिस्ट पोएट्री साइंस के साथ जाने के बदल, इंक्लूडिंग कालिदासा मेंशन्ड दिस बोल के मैं अभी बोला है, बट कालिदासा इज वेरी गुड पर्सन टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ गर्ल्स, लेडीज. If you look at Megha Sandesham is a newly married yaksha. How he is thinking about his wife and then describing. उसमें थोड़ा ज्योग्राफी भी है, कैलाश के बारे में भी बोला है. Some part is there, but then after Kalidasa, most of the poets start describing beauty, describing ladies, describing emotional feelings के लिए poetry लिखते थे, but not for intellect. So we don't have to blame Westerners. There is no point in blaming Westerners. Even today, I will send my kids to America, I will send my kids to Europe, I will send my kids to Canada to settle, I will send my kids because the life is much better there. Unfortunately, I was a person who was not ready to go myself to America or Canada and go and settle. Otherwise, I would have been in British Columbia University doing my research in 1985. I got an invitation. मैं डिक्लाइन किया था उस टाइम पे, मुझे नहीं आना बोल के, बिकॉज आई लव भारत. बट अभी मुझे पूछो, आई लाइक टू सेटल समवेयर इन वेस्ट देन लिविंग इन इंडिया. बिकॉज इधर क्वालिटी को नो people value only markets. Who are the greatest rishis and sannyasis in India? You name all of them. वो ब्ला 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 इंग्लिश में देते, उसको रूट नहीं है, उसको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है. वो गवर्नमेंट का लैंड कैप्चर करके बड़ा टेंपल बनाया होगा. He can fight against government. How did he grab land grabbers है वो कैसे grab किया? Because he has got a political influence. It will not take much time.
Easy for anybody to do that. Actually, people are behind them. They are the spiritual leaders in India. They are the stupid people who are governing. Knowledge के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है. But So it is diluted. So India yeah, has got a good market. India, with all this knowledge, with all this yoga, with all this psychological knowledge, with all these counseling mentors, masters, rishis, sannyasis, India ka happiness index, we are very, very bad. That is because we have capitalized, marketed, materially sold things in this rest of the world. हमारा sannyasis, famous people, अभी India पे whoever is there, they must have all started marketing from West only. अमेरिका में जाके उधर से, unfortunately विवेकानंदा को भी वो करना पड़ा. मैं इसी पे Vivekananda would have never gone to America. He would not have become a Vivekananda. Chinmaya Swami would not have become a Chinmaya Swami if he would not have gone to America. Osho should not have become an Osho if he has not made his umbrella in Osho city there. Maharshi Mahayogi should not have been. And lot of cheaters. After that, lot of cheating Swamis are also there in India today, who are all famous. They all came from that tradition from West. Why are we finding fault? Because we have no patience. Nobody funds. Nobody funds person who has got merit in this world. Only fund and money goes to people who market with the superficial knowledge. That has become. I'm so happy Ajeet is at least hosting me like this. I have got 100,000 pranam because nobody even ready to host me for a program like this also. No, Dr. Saab, I understand what you're saying. आपका थोड़ा mute कर दो एक second. Very important thing you brought up, and this is one of the reasons I have started this channel. I totally understand what you're saying. That whatever is the real knowledge, the real knowledgeable people like you, they don't get exposure. But again, I will say कि I have like not even 1% knowledge you have, Dr. Saab. I don't have even 1% knowledge. And the only thing I had in my heart is that I need to show the world what our Bharatvarsh is. And I keep saying this, that we don't need their certificate. And in the last program I said this, that having said this, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो सनातन है, हमने बाहर से भी चीजें अपने अंदर समाहित की हैं. We have assimilated things from outside which are good. So I say, why not take that marketing from them? They're very good marketers. I meet people, they don't know ABC, but they will sell you, bridge over Washington DC, whatever, a New York bridge. So I say that we have that knowledge. Everyone is different in their journey. So I say that someone gets happy with having 10 viewers, just 100 viewers, 100 subscribers. I'm not in that kind of category. I want to reach to more people, because my aim is to not just touch 1% or 10%. Why not? As you said, Osho, Vivekananda, they had to travel physically. Now with the internet and even with the blockchain coming and Web3 coming, we can reach even, we have taken pictures of, forget that thing. The thing is that we can reach every house now through internet. And our job, like people like you, Dr. Saab, I think, like you have the real knowledge now. And with your lectures, this is the actual knowledge. Whatever they're saying, like the fake ones you're saying, we have that media now. So I am focused on that. And I'm trying to make ways, again, marketing. Why not use marketing? Yes, I will use marketing. I do use marketing so that I can reach more people, because my aim is Sanatan. I want to give the true knowledge based on my experiences. Again, I do not give any recommendation or anything to anyone. It's my own research, but I say that the time for Bharatvarsh is coming. We should be focused on our strengths and grabbing their strength now and making our Bharat great the way we want it to be. That is my take on that. And we were talking about Elon Musk, Dr. Saab. So एक क्वेश्चन आया आपके लिए. So Elon Musk अभी न्यूज में एक नंबी नारायण आपके इसरो के साइंटिस्ट थे, काफी न्यूज में है. उनकी his movie got released I think last week, and the story I read, it's like mind-boggling. The same thing you just told, that it's not, people get frustrated when they see this thing. That is such a bright mind that I read one line and it just blew my mind. That the payload
of whatever kgs was there has not increased by even a single gram since he stopped working on that one. And the technology was working. The Elon Musk is trying to send people to Mars and blah blah blah. He said we would be competing with that person right now. And yes, we should market and get that money. Why not take the money and use it for the public welfare? It's a good cause. Get as much money. I'm no qualms in saying that I want money, but that money will mostly go to the serve our people, the actual our community. So my question to you, Dr. Saab, do you know Nambi Narayanji, and is like would India be different if he would have kept working for ISRO and he would not have been given the kind of treatment he got, and would we be able to compete with Elon Musk? I don't think one Nambinarayan could have made a lot of difference. इसरो में वो इसरो में काम कर रहे थे, that is good. Abdul Kalam was in ISRO, but Abdul Kalam left ISRO and then joined the Department of Defense. So कोई एक आदमी से एक डिपार्टमेंट बड़ा नहीं होता है, because Department of Space work in project mode, and the whole story is not at all scientifically or maybe human problems related to science. That was a Kerala politics. Actually, there was K. Karnagaran and Congress pe ruling time pe thoda internal politics tha. So they wanted to divert. It's all politics. It is nothing to do with NASA, nothing to do with America, nothing to do with ISRO, nothing to do with anything else. So I don't want to comment on that. Don't think that a department runs with one person, or if you would have been there, we would have been greater than NASA. ऐसा कभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है. Because NASA is not a small organization. NASA has got funding. They do commercial activities. It all depends on money. Without money, nothing happens. Number one. Number two, I was part of ISRO. Not only ISRO, I was part of the human resource analysis of ISRO project भी किया था मैंने. Actually मेरा एक रजिस्ट्रार था, वो हमारा TN सेशन का जूनियर था, तो he had a पनिकर. I like to remember his name. ये बात आ गया है इसलिए बोलना है. So हमने एक क्या किया था, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ऑफ इसरो, उसके बारे में एक रिसर्च किया था. Probably first research on human resource capital of ISRO or any organization to that matter. Actually, the most best scientist also, we have MGK Menon, UR Rao, we have Kasturi Rangan and Madhav and all that was later part. हम research कर रहे थे वो time पे, they were not a great people like that, no. Madhavan Nair, Radhakrishnan, they were all junior. We were never concerned about them. Up to Kasturi Rangan, we had from MGK Menon, maybe all of them. If you look at most of the scientists in ISRO, maybe a scientist in ISRO. If you ask me a question, how much percentage of my energy is used in research? How much percentage of my energy is used in science and technology department? Normal government department, how much energy is being used by a scientist? It can be the best scientist can use only 25%. Because rest of the time, हम क्या करना है? How to appreciate or how to show that you are working to your boss is more important. Working is not important. How to show that you are working to your boss, convincing him, talking to him, mask karna hai. That is more important. India has become a fake nation. You are not serving in the people are not important. Showing that you are serving is more funding than, see, आपके government का project देखो. Maybe you have doing a small project, but उसका advertisement उससे 3 बार fold पैसा खर्च करके करते वो लोग. You start a small bridge construction, 50 lakhs है उसके लिए. But maybe you spend 1.5 crores for advertising it, and you will spend a lot of money in doing malpractice in इसके लिए. Even
All that has become like that. So the whole Nambi Narayan story is only a fake. Everybody knows, but the reason for that is not he was a great scientist, somebody wanted to keep India down. Aisa picture mat de do. That was only a small Kerala politics. Unfortunately, he had a great courage to fight against the case and then go behind it, prove he was right. But that doesn't make a person to get a Padma for that. That is also another politics. Don't think that somebody, there are a lot of people who have got a lot of case file, they have fought for cases and then got something. But why do we want to do this? That is because the legal system, the other day I was talking on legal systems on a one platform. You know, 2/3 of the prisoners in India are convicted or maybe put into jail expecting their verdict to come, because we have got a legal system which takes long time. So sometimes it becomes an advantage for somebody, sometimes it becomes a disadvantage for the other party. Legal system is very poor. I also have an LLB and I also work very close to human rights commissions. I work for few of my relatives are one of the greatest practitioners. I am very close to legal systems in India. I also follow politics and cases. So we understand. I was also part of government in strategical analysis. We have neighbors who are fighting. We have internal politics. And our whole energy, if you look at television, today I was talking to two television people who are famous television people in this country. I was talking to them and saying that we are wasting a lot of our time, unwanted things to discuss on television than the useful things. Most of the cases are like that. We make a lot of activities useful, but maybe 100 times more energy is wasted because of propaganda, unwanted discussions which are not worthwhile. Yeah, this is our, if this problem cannot be solved, and we don't have to compete. Why Ajit ji has to say that no, Elon Musk se compete karna hai, West se compete karna hai, China se compete karna hai, Pakistan se compete karna hai. If you look at my Facebook request for friendship, I have got more people from Pakistan who wanted to talk to me than Indians. The friends request है, interview के लिए भी तैयार है वो लोग. But they have a problem, they cannot speak Hindi or English as fluent. They want Arabic, which I don't understand. Urdu I don't understand. So that is not happening. Otherwise मेरा हिंदी में भी और थोड़ा इंग्लिश में भी थोड़ा इंटरव्यू उसके साथ भी हो गया था. It is not number of people. 1,000 people watching a program YouTube is not important for me. How many people come and then seriously learn? Why America is great? I went to America to teach, I went to America to visit for 6 months. But I was asked to teach Bhagavad Gita there. I had very, very, very concentrated, strong, disciplined people who are every week 1 hour listen to me, ask questions, discussions. इसलिए मैं Bhagavad Gita पढ़ाया उधर. Why I did not teach in India? Because there was no learners. उसके बाद कोविड आ गया, और टाइम पे भी मेरा ऑनलाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वर फ्रॉम अमेरिका. And another event where I taught my Bhagavad Gita was United Nations. The yoga community hosted my program. Why Indian people don't want to learn it? You know why? If somebody listened to my lecture 2 times and the next time he will say, I am giving a lecture on Bhagavad Gita. Everybody wanted to become lecturers. They wanted to propagate. You learn 6 months yoga and become a yogacharya. We are in a hurry to establish because we have poverty. Basically, we have poverty. We are mean people who are looking for fame. We are not learners. We are not having that curiosity to learn is not there. Zeal for learning is not there. Questions भी नहीं है हमारे पास. When मैं अमेरिका पे गया था, I went to one school for a religious discussion. Sikh, Jain, Hindu, Muslim, Christian, Jewish, all people were there in the panel. I have put it on my YouTube. You must see the questions asked by students. I was thrilled. I must have gone to hundreds and thousands of academic institutions in India. Questions नहीं है. Lecture दे दो, questions नहीं है हमारे पास. So I love people with questions. Why I like Ajit is because you have questions.
If it is not an interview also, I have no problem. See, interview happens only probably, or discussions happens, YouTube happens only, live happens only like this once in a while. But most of my time in the day is spent for discussions which are not recorded most of the time. ये टेलीफोन करके पूछते मैं आंसर दे देते. आपका भी 2-3 लोग उसके बाद मुझे पूछा, उसका डिस्कशंस हो गया, बट आई एम नॉट पोस्टिंग इट बिकॉज देयर आर पर्सनल प्रॉब्लम्स, और मे बी कैजुअली दे मस्ट हैव डिस्कस्ड व्हेन आई एम आउट, मे बी ऑन टेलीफोन डिस्कशंस हो गया है, उसका एक रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे रहता. सो आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी मस्ट बी वेरी सीरियस. हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी क्वेश्चंस नहीं है. टीचर गिव्स क्वेश्चन, द सेम आंसर इज गिवन, वो मगअप करके आंसर देना है. सो क्यूरियोसिटी, लर्निंग का वो तरीका भी चेंज हो गया इंडिया में. Luckily, next week I am in Bangalore in a school where I am addressing teachers, parents, and students. I wanted to change the culture of learning patterns in India. Not teaching. Classroom should not be a teaching place. Classroom is to be a place of learning with a lot of questions and discussions. That is what Upanishad. We don't want classrooms of Vedas. We want classrooms of Upanishads. Upanishad, sit beside, ask questions. I am sure if that happens, we will also become a developed nation. We don't want to be a developed nation. We want always in developing. Right? We want always to be happy. But little more we will become better. No, Doctor, I think we are already on the path, and this is a very vast subject, geopolitical thing. And I have a very different view of what the Western world has done, how they have done it. Like, very, 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 I'll say, black history for these, the way America, the Britishers, they went there. The way America became America by ruining the native population, how they did it. It's a very whole complete different topic. Yes, Dr. Saab? Yeah, but why do we want to worry about? India got independence 70 years back. India had a great Arthashastram was written by the great economists, and then Chanakya was a great person who united India, and Alexander could not invade India. But then Mughals came, Britishers came, all the different people, different part of the world came. They ruled India. But it is glad to know that an Indian is going to rule probably Britain. Is it not a gladdening thing that the India is, and most of the best countries, including America, why do we want to compare? Because half of America's intellectual people are from India. So when we say Loga Samasta Sugino Bhavantu, the whole world is my family members. Nothing wrong. It's like one family is in India, another family is in America. No, you look at the maximum number of people from last year migrated to America and then took citizenship. No, that's good. As humans, we always aspire to, go to the next level. And that's what, Indians think that this is the next level. So I have seen the whole picture now. I have seen the 360-degree view. And I firmly believe that, it's of course, Vasudhaiv Kutumbakam, it's very good, idea in book. But, if, as I said, very few people, you have your own house and you first look after your kids, you first look after your family. It's your, as a man, as a strong man, I'll say, it's your job is to look for your family first. Not, to say that, yes, the whole world is mine, but yes, but that's why I say look after your family first and then became so strong that yes, then you can look after other people. And as you said, those people who don't have money, they don't have power. And that's why we need to Ajeet ji is interviewing me from Australia because you have been in West, and then I'll tell you, the Australia is one country where the land is maximum less utilized. There is lot of scope for occupying Australian land and becoming much richer and then establishing people from different part of the world. Unfortunately or fortunately, Australia
वो इमिग्रेशन में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन दिखा रहा है, नहीं हो तो ऑस्ट्रेलिया कुड हैव बीन मच बेटर प्लेस देन कनाडा फॉर पीपल टू होस्ट. मे बी यू हैव गॉट लॉट ऑफ डेजर्ट देयर, but excluding the desert, looking at the place you have utilized for agriculture probably will be less than 10%. Yeah, less than that. India utilizes 50% of its land for agriculture, but the productivity on those agriculture land 50% is much less. So we lack in producing from the fertile land the best way. Similarly, the intellect what India has got, we produce less intellect out of that. Most of the academic institutions, I will tell you, not less than 2% is useful. The BTech who are coming out from the engineering colleges. We are actually faking. I was an executive director for an engineering college का executive director था. मैं management professor था एक engineering college पे 2 साल. I'll tell you, so stupid education system. Are we fooling our own children? Everybody knows, politician knows, academician knows, everybody knows. This is what is happening. And we have so many NGOs who think that they are ruling the country and government is doing nothing. And politicians are so corrupt. I don't want to criticize anybody. When I start, so that's a whole different topic. We need a change. Only my requirement is we need a change. So what I look at in this world is to create few administrators who are clean, understand India. That is why last year AA time pe I was running a program which is called What India Needs. WIN, What India Needs was the program. 30 days until August 15th, 30 days. I was interviewing a lot of people. अजीत जी आप अभी कर रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मेरे साथ बिठा के उसको इंटरव्यू कर रहे थे last year. What India Needs, WIN program. It was called a WIN program. Everybody has this concern, but we don't work together. Everybody wanted to start their own organization. I don't want. I wanted to do work with anyone who is ready to use me from this time onwards until my death. But I have not seen a worthwhile person with whom I can contribute to my rest of my life. Everybody is selfish. Everybody is, next day they want to become famous. That is the problem. The other day I put some few subhashitams. Oh, Sundo. I am saying who cannot be a learner, who cannot be a good person who can study, who cannot be a good person who can reach into spirituality. उसने वो 3 सुभाषितम पे मैं explain किया है. उसका reason भी आप ही है, because you wanted सुभाषितम to be explained. वो बीच में नहीं हो रहा है, तो I just picked up few slokas में अजीत के लिए भी यही बनाया है. थैंक यू डॉक्टर साहब. और अभी आपने बड़ी रेलेवेंट बात की जो पढ़ाई का हमारा स्टैंडर्ड है इंडिया में, और उसी पे, because I have lived in the US as well and I have seen many H1Bs, IT, guys coming from South especially. I'm not pointing fingers to anyone. As you said, fake experiences, fake degrees. It's like 60 to 70% of H1Bs in the US is like fake. So even what we are exporting there is not like our cream anymore. And those people are smart people. They know what you're saying. So now that's why, again, that's a totally different subject. But so the thing is that rot is everywhere, Doctor. Rot is everywhere. My aim is to come out of that rot and see what we can make out of it, contribute in a positive way. And that's my small humble कोशिश है इस चैनल के माध्यम से. So डॉक्टर साहब 2-3 क्वेश्चंस आए हैं. Let's finish it. Ask this question and finish the show. So मोनिका जी पूछ रही हैं डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल से जो आपने बात की थी हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो उस पे कह रहे हैं कि I saw one video, someone said chant this maha mantra, some miracle will happen. I can only say stupid. There are a lot of people who wanted to do miracle by keeping yantra, mantra, tantra in their houses. Then the rest of the people are fools or what? आप काम करो, भगवान कृष्णा ने ही बोला है. He is not, भगवान कृष्णा भगवत गीता में काम के बारे में, कर्म के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, स्वधर्म के बारे में बोल रहा है. स्वधर्म मंत्र चैंटिंग क्या नहीं है.
Dr. TPS never go to temples for your information. I only go टेम्पल पे क्यों जाता है? लेक्चर देने के लिए कोई बुलाए तो मैं जाते, मैं टेम्पल पे भी नहीं जाते. मेरा मंत्र चैंट करके मेरा इंटरनलाइज्ड एनर्जी बिल्ड करने के लिए, मुझे ताकत बनाने के लिए, टू गेट करेज, समटाइम मंत्रा विल हेल्प मी. माय प्रॉक्सिमिटी टू गॉड, मैं, गॉड इज इनसाइड मी, गॉड बाहर नहीं है. एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मिराकल. मैं काम करे तो उसका फायदा मिल जाएगा. मंत्र करने से कोई माउंटेन कैनॉट मूव. Nobody can do that. That fake people are there who are doing all this mantra, tantra, yantra. Dhana, you can get dhana inside your house, you keep a yantra inside your house. Changing your name spelling, you can change it. All such fake people are actually the criminals in this country. They have not understood anything. I think I keep saying most of the people are poor because whenever they get a little money, they go to a big temple, they travel all the places and do pradikshina and then come back and put all the money inside the hundi, and which goes to government for running that. It's all stupid. By paying money, by visiting temple, by going for all these achara karmas, no benefit will come to you. I am vouching it because I am very close to a tantri who did all these, but he keeps saying these are all required because there are mantras inside those which has got a great value, which is to be taken to the next generation. I am thankful to all the temples and the tantris and pujaris because they kept these mantras live for long years. But continuing that by all the people with a big popularization is not actually required, and no miracle will happen. No miracle will happen because I am chanting mantras. That will give me energy and courage to do jobs in my life. Next question, Dr. Binu. Her question is, sir, many say we should not do Murti Puja. We are confused. Doctor, please guide us. Actually, Murti is either individual also is a Murti. I said, no, Hridaya Guhara Madhye Kevalam Brahma Matram. मैं पहले एक बार भी बोला था, फॉर रामकृष्णा देवी वॉज नॉट, देवी टेम्पल पे जाते थे वो पूजा करने के लिए, वो माला उसके गले पे डाल के वो डांस करते थे. वो मूर्ति कौन है? वी आर द मूर्ति. क्यों मूर्ति घर पे नहीं रखना, पूजा नहीं करना? बिकॉज हर पुजारी टेम्पल में जाके पहला श्लोक क्या है मालूम है आपको? आगमार्तंतु देवानाम गमनार्तंतु राक्षसाम. These are all tantra shastra. I learned puja, how to do puja. I can do pujas to any god. I learned all that by traditional methods. But I am not doing puja. I am not a pujari. But every statue, मूर्ति has got energy consume के लिए, उसका energy consume करके रखने के लिए ये metal पे, ये granite पे उसका energy consume करके distribute करने का एफिशिएंसी है. हम क्या देते वो लेते और वो डिस्ट्रीब्यूट करते. सो लॉट ऑफ चैंटिंग मंत्रास इज डन इनसाइड सैंटन सैंट्रोम टेम्पल के अंदर, पूजा करके आचमनम करके पूरा माला डाल के दूध डाल के कंटिन्यूसली चैंट करे तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाता है. आपके घर पे आप क्रोध, फाइटिंग विद हस्बैंड, फाइटिंग विद चिल्ड्रन, टीवी प्रोग्राम्स, आपका माइक्रोवेव ओवन, टेलीफोन पूरा है घर पे. विथ ऑल दिस आपका मूर्ति पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होता है. रीड माय बुक, सीडलिंग बोल के एक बुक लिखा है मैंने, वो यूट्यूब एक ब्लॉग पे है. आई विल ऑल्सो पोस्ट दैट अंडर दिस. एनर्जी कंसेप्ट इन पूजा हैज टू बी अंडरस्टूड. इसलिए डोंट कीप मूर्ति बोलते. But you are a person who is very clean, your house is very clean, आपको क्रोध भी नहीं होगा, you don't shout at anybody, मन में भी थॉट में भी कुछ भी नहीं है. You are a person who is practicing सप्तशुद्धि. टेम्पल पे मूर्ति रख के कौन पूजा करते हैं?
पुजारीस, उसके लिए सप्तशुद्धि चाहिए। प्राणापान व्यानोधान समानामे शुद्धिंदम, लास्ट टाइम मैं बोला था, लास्ट में वो लास्ट डिस्कशन पे सप्तशुद्धि का वीडियो भी मैं डाला होगा उसमें। सो इफ यू आर ए पर्सन विद सप्तशुद्धि है, आपको आपके घर पे सबके लिए सप्तशुद्धि है, देन मूर्ति रखने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी सिंपल मैनर. This Yes, can be a doctor. different discussion. Yeah. Yes. So, friends, you keep asking me about Dr. TPS contact. Here is his email ID plus his phone number. And Dr. Saab has very gladly said that anyone can contact him, and he is happy to help anyone. So, feel free to contact, and please message him. And whenever he has time, he will give you a call back. So, the next question, Dr. Saab, is from Manisha Ganatra. ये कह रही है डॉक्टर साहब कि सर, बच्चे उस समय कैसे शांत और तनाव मुक्त रहें जब उनका रिजल्ट का इंतजार पड़ोसियों और परिचितों को उनसे ज्यादा रहता है, क्योंकि यही प्रेशर उनके मानसिक स्तर को प्रभावित करता है। सो ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। उसके बारे में क्या बोलना मैं? ये पूछ रहे हैं कि कैसे, एक सेकंड, शी इज आस्किंग यू डॉक्टर साहब कि द relatives and neighbors are waiting more for a result, so that is the pressure it gets built on the child. So how can we relieve that pressure from the child? See, यही बोल रहा हूं, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? एक्चुअली बच्चों लोगों उसका कितना मार्क मिलता, रिजल्ट मिलता, एडमिशन मिलता, जॉब मिलता, ये पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। निमिषम ज्वलितम श्रेयम नदु धूमयितुम चिरम। मेरा हर दिन, हर मोमेंट कैसे खुशी रहना वही इंपॉर्टेंट है। वो हैप्पीनेस हाउ आई कैन मेक इट लॉन्गर, एक क्रूशियल क्यों रहता है? नीट एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारा इंडिया में एलिजिबल कैंडिडेट ज्यादा है, सीट्स कम है। ज्यादा सीट कम लोग हैं अप्लाई करने के लिए है, तो क्या करते हैं, सब लोगों को एडमिशन दे देते, तो कंपटीशन रहता। वो कंपटीशन क्यों है? ये सिलेबस में ये पढ़ने के लिए ये प्री क्वालिफिकेशन हो मिले तो यू कैन पास इन दिस विथ गुड मार्क्स। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसलिए एडमिशन टेस्ट, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो नहीं है तो क्या करना? लुक एट 30 पॉइंट्स टू स्टूडेंट्स, 20 पॉइंट्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। मेरा एक ब्लॉग है, 30 points to students, how to pass exam, how to study, enjoy studies, उसके बारे में मेरा एक ब्लॉग है। 30 points, 30 points है पेरेंट्स एंड टीचर्स, 20 points पेरेंट्स एंड टीचर्स, 30 points फॉर स्टूडेंट्स। वो देख लो एक बार, आई थिंक द आंसर विल बी देयर। जी डॉक्टर साहब, let's take the last comment here today. Doctor, it's almost 1.5 hours now. हिमांगी जी बोल रही हैं कि नमस्ते अजीत जी, आपका चैनल का जो ध्येय है वो जरूर पूरा होगा। एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर अपने आसपास के समाज में मैं देख भी रही हूँ कि भारतीय संस्कृति और धरोहर का महत्व अब लोग सही मायने में समझ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज द लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब फॉर यू. Daljit Sonda is a very regular customer, viewer our, and very like knowledgeable person as well. He says Dr. TPS concepts are real and need practice to realize in your life. So my pranams and namaskaram to all of you. Let all of you be happy, but all of you be unsatisfied. I am happy, I am unsatisfied. हम सैटिस्फाइड हो गया तो काम नहीं करते, बट यू हैव टू बी हैप्पी. सो डॉक्टर टीपीएस इज ए हैप्पी पर्सन, बट आई एम नॉट सैटिस्फाइड. मुझे और काम करने के लिए ताकत है, करने का कोशिश भी कर रहा हूं, एंड एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच कंट्रीब्यूशंस
to work together with anyone who is interested. Yeah. I had missed this one comment, Dr. Saab. This is the very relevant point we were discussing. So I'll finish on this one. मैत्री says, अजीत जी नॉलेज गिविंग वीडियोस पर लोग बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं. नॉलेजेबल वीडियोस पर लोगों की संख्या भले ही कम है, पर ज्ञानवान और जागरूक लोग जुड़ते हैं ज्ञानवान चैनल से. ये मैं बोलता हूं दोस्तों कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, कि भैया वो मैं पानी की वो छोटी बूंद हूं, धीरे धीरे आज धीरे दिख रहा है, लेकिन एक दिन वही पानी की एक एक बूंद जो आज हम एक एक वीडियोस के माध्यम से आपके पास ला रहे हैं फ्रेंड्स, वही पानी की एक एक बूंद उस पत्थर पे हमारा मार्क बना के जाएगी. और जैसा भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को महाभारत में कहा था कि अर्जुन, जो कह रहा था कि अर्जुन की भैया मेरा दिमाग एक जगह पे बैठता नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने सिर्फ एक ही बोला था, अभ्यासम, सिर्फ अभ्यास करते रहो. तो मैं वही लाइफ में लेके चलता हूँ कि करते रहना. मैंने जब तक मैं अपने गोल पे नहीं पहुंचूंगा, मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा, अपना प्रयास एक एक बूंद वाला करता रहूंगा दोस्तों. लेकिन एज डॉक्टर टीपीएस वेरी ब्यूटीफुली सेड कि आई एम हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड. आई एम हैप्पी राइट नाउ, वेरी वेरी हैप्पी, but I'm not satisfied too. My aim is to go somewhere else. I'm walking on that path, but I'm not just looking for the destination. I'm very happy right now to enjoying this journey too. डॉक्टर टीपीएस जैसे लोग मिलते हैं जो इतने नॉलेज के मतलब सागर हैं, और एक एक श्लोकास जो हम बात कर रहे थे विमान शास्त्र की, हर एक चीज पे उनको मतलब उनके पास बातें हैं. ऐसी चीजें हम लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स आपके लिए. Or before I let Dr. TPS go for today, Dr. Sir, any parting words from you? अभ्यासम is more important. Practical applications of हमारा knowledge practically apply करना है, वही important है. That is what is to be done. Next week में बैंगलोर पे है for a workshop for teachers, parents and students. TPS, teachers, parents and students. So 4 दिन. That's how I do workshops. So किधर भी मेरा सर्विस चाहिए बुलाइए, I'll be there with you. That's all what I. थैंक यू डॉक्टर साहब. सो फ्रेंड्स, आज डॉक्टर साहब को अब यहीं जाने देते हैं, और आप लोग कमेंट करें कि आप लोग डॉक्टर साहब के पास आप देख रहे हैं कि कितनी अथाह नॉलेज है. तो मैं चाहता हूं कि एसोसिएशन डॉक्टर साहब जैसे लोगों के साथ ये एसोसिएशन मेरी बनी रहे, क्योंकि ये चैनल का जो मुख्य मुद्दा है कि हम अपनी आत्मा को जगाएं, अपने भारत की आत्मा को जगाएं, अपने आप को जगाएं, और एक बेहतर इंसान बन सके, कि एक बेहतर सोसाइटी बन सके, एक बेहतर वर्ल्ड बन सके. तो प्लीज कमेंट करिएगा. और डॉक्टर साहब का मैंने कांटेक्ट दे दिया आप लोगों को, और आप लोगों को डॉक्टर साहब से और किस बारे में बात करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री. I'll discuss that with Dr. Saab, and if he agrees, I'll bring him again. So thank you, Dr. Saab. Thank you very much. Jai Bharat, Jai Hind, Swasth Bharat, Swasth Hind. Thank you. So friends, please आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सब कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं. और जिस अभी एक कमेंट आया है, प्लीज कमेंट करिएगा कि डॉक्टर टीपीएस के पास हर चीज के नॉलेज है, तो किस चीज के बारे में आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं. आज का भी सेशन मैंने सोचा था कि आधा पौने घंटे का होगा, बट उनसे बात करते हैं तो मेरा भी मन लगने लग जाता है, और ये 1.5 घंटे तक का सेशन चल पड़ा है. कल फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे. कल संडे है, तो डॉक्टर पांडे के साथ हम क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं सुबह 11 बजे भारतीय समय अनुसार. सारे समय भारतीय समय अनुसार देता हूं मैं. कल आप लोग आइए, जुड़िए और अपना क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर साहब से. हिमांगी जी, नेक्स्ट टाइम में भी क्वेश्चन पूछेंगे. अब थोड़ा सा लेट कर दिया, मैं तो सारे क्वेश्चंस ले रहा था मैं. दोस्तों, आज के लिए इतना ही. कल फिर से मिलते हैं दोस्तों. आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा, और ये कमेंट जरूर करिएगा कि डॉक्टर टीपीएस को और किस टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं. ही इज नॉलेजेबल इन एवरीथिंग. एज यू कैन सी, देयर इज ऑलरेडी वन कमेंट. हेल्दी लाइफस्टाइल सेज एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी. ओके, और आप लोग भी कमेंट करिएगा प्लीज, क्योंकि हम लोग रखेंगे. ये सैटरडे का मैंने गेस्ट के लिए सोच रहा हूँ कि रखूं. मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज होता है दोस्तों, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए हैं, खड़े हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ हिंद. कल मिलते हैं 11 बजे.